Good morning, dear students. Hearty welcome to BPHES CSRD Institute of Social Work and Research Social Work Lectures. Method Course 1 Working with Individuals and Families Social Casework. Today's topic is Unit 4 Part 3 Techniques of Social Casework and Roles of Social Caseworker. The previous classes we have learned the concept, history, values, principles, process, tools, and skills of social casework. And today we are going to discuss the techniques and the roles. Now, what are the techniques of social casework? What is a technique? Casework techniques are the procedures of helping the client. They are the wherewithal through which the client gets the experience of being helped. The client may not perceive the procedure or specific units or characteristics of his or her contact with the social worker, but he or she will generally experience the fact of being helped. इसमें क्या बताया है? टेक्निक्स आर द प्रोसीजर. ये लोगों को मदद करने का वो तरीका है, तंत्र. इससे क्लाइंट को पता चलेगा द केस वर्कर इज हेल्पिंग द क्लाइंट सिस्टमैटिकली, साइंटिफिकली. So techniques are certain procedures, certain ways of helping the people. Now, there are three types of techniques: explorative or the counseling techniques, supportive, and techniques of enhancing resources. Supportive techniques are social support, giving social support. Enhancing resources are the techniques of environmental modification, working with the environment. So explorative is mainly helping the client to change his behavior. This is more or less psychological technique, explorative techniques. Purpose is psychological exploration into the personality of the client, understanding, analyzing the behavior of the client, and help him to change his attitude, bring some change in the knowledge level, and ultimately help the client to bring some positive changes in his or her behavior. The supportive technique is making the person comfortable. It is rendering social support. It is trust building. It is making the client socially supported, emotionally supported. It is rapport building techniques. This is the basic techniques, and casework has to begin with the supportive techniques. Then go on to explorative and the environmental modification technique. The third one is the environmental modification, or bringing some changes in the environment. Now coming to supportive techniques, there are 7 supportive techniques: assurance, allaying the feelings that are overpowering, accrediting,
and building of the self-confidence, encouragement and reassurance, being with the client, action-oriented support, and advocacy. Assurance means building the confidence, encouraging and accepting the client, assuring the client that the client is normal in his level of feeling, his level of helplessness. So it is okay to be helpless, hopeless at this situation, because at that kind of situation, everyone may be feeling weak and helpless. So give him or her assurance she can come back to life. There is hope in him in the future. There is no need for getting disheartened, getting disappointed. So there is still hope. So be hopeful. That is giving assurance. The second one, allaying the feelings that are overpowering. This is emotional support. Sometimes the clients are overpowered, overwhelmed by emotions, feelings, anger, sadness, depression. So we have to help the client to come out of these feelings, overcome these feelings, save the client from emotional breakdown. So using these techniques, the caseworker will help the client to understand the feelings that are overpowering, that are blocking the client's thinking capacity. So helping the client to come out of this overpowering feeling is the second technique of allaying the feelings. Third one is accrediting and building of self-confidence. So when the caseworker notices something positive in the client, something praiseworthy, something good, then the caseworker should give him credit, her credit. Yes, you are doing the right thing. आपके क्या सोच था, बहुत बढ़िया था. आपने जो करने की कोशिश किया, बहुत अच्छा था. So this kind of accrediting the behavior will build the self-confidence of the client. उसको पता चलेगा, yes, मैं तो सही तरीका, सही रास्ते में हूँ. So bringing up, raising the level of confidence, self-confidence is an important part of rendering social support. It is a very good social support to build up the self-confidence of the client. Fourth one, encouragement and reassurance. So the caseworker should always encourage the client for his or her good behavior and building his hope, telling that he can be all right. You are in the right path. The client is doing the right thing. So he can come out of this problem. So keeping always encouraging attitude, giving him encouragement, that will give reassurance. The client will not feel failure or will not feel that defeated, will not feel so much of hopelessness in himself or herself. So this encouragement and reassurance is very good social support technique. The fifth one is being with the client. The client should feel that the worker is always with the client. Whatever is happened to the client, whatever is going to happen, the caseworker will never leave him, will never blame him, will not withdraw his support. So whatever the client feels, the client can share with the caseworker
And caseworker will give such a feeling that whatever happened to you, I am always with you. मैं आपके साथ हूँ. जो भी होगा तुम्हारे साथ मैं हूँ. तुम्हें कुछ घबराने का बात नहीं. You need not be afraid. I am always with you. So this kind of support, social support, this is very important in the progress of social casework. Action-oriented support. Now, what is this action? Action is the changes in the behavior. Some positive action. Maybe going to the school, maybe resigning from a dangerous job, maybe withdrawing from a unhealthy relationship, so breaking some unhealthy relationship. So this is some actions. Behavior has feeling part, thinking part, then action part. Social support has to deal with all these three components of behavior. The thinking behavior, the feeling behavior, and the action, the proper behavior. So उसमें verbal action होता है. So social support should be in such a way, the client must change his talking behavior, communication behavior, his day-to-day, उसका जिंदगी में कोई तो बदलाव. A positive action, some good habits, away from or withdrawing, terminating some bad habits. These are some action-oriented strategies, and the caseworker should identify some of the unhealthy behavioral practices, some of the unhealthy habits, and help the client to stop those behavior and start some good and healthy habits. Maybe some relaxation techniques, some new hobbies, some readings, some new relationships. So what are the positive actions? What are the healthy habits? Those should be brought into the life of the client. That is the action-oriented support. Finally, advocacy. Advocacy was discussed earlier also. So advocacy technique is mainly used with the vulnerable sections. Women, children, Divyang, elderly population. So those who are in need of social support, those who are denied of their rightful thing in the society. So when the child is, you notice that the child is abused, harassed. The woman is the victim of domestic violence. So whenever somebody's right is taken away, whenever you notice injustice is being practiced, is going on with the client, then the social worker has to practice, has to bring in this advocacy component in casework. The social caseworker has to approach the appropriate agencies, civil agencies, authorities, and take up this case of injustice, violation of human rights, and stand for the right of the client, stand for the establishment of human rights for the client. So these are the supportive techniques. Now, techniques for enhancing resources, this is placed as third in the index. However, we are discussing at the second place. So there are three types of enhancing resources. This is mainly working with the environment. So we begin with extending social support and progress through changing the social circumstances. The first one is providing or procuring material help, which means some financial assistance, some material assistance. So when you notice that the person, the client is so poor, is unemployed, he has no place to live, he is living in the street, no job, no family. So the child require or the person require immediately shelter, clothes, food. So with the
networking of the caseworker. The caseworker will try to provide an immediate shelter, an institutionalization, an appropriate reference to a suitable community resources and provide him the immediate assistance, provide the child the immediate shelter. For example, अगर एक केस वर्क देख रहे हैं, the child is abused in a hotel, in a tea shop, the child is put under child labor, child is put under harassment, abuse. So what is the immediate assistance required? Maybe contacting the child line. The child need immediate rescue from the dangerous situation of child labor. Immediately उसको shelter चाहिए, food चाहिए. The child should be separated from that dangerous situation, should be rescued from that dangerous situation and put into a safe shelter, children home. So that is the immediate help. Now, and give the child maybe clothes, food, shelter, etc. The second one is change of physical environment. Taking the same example, physical environment is physically shifting the child from this circumstances to another circumstances. School dropout, maybe finding a suitable hostel, residential school, that is change of the physical environment. Maybe a job place is a place of harassment, violation, violence, then arranging a suitable alternative occupation and make that young person change his work environment. So this is another area of casework is intervention, one type of technique that change of physical environment. Sometimes अगर वो environment change नहीं होगा, उसको जिंदगी में बदलाव नहीं होगा. The child or the person, the young person may be in more trouble. So change in the life or occupational or educational environment may be the most appropriate step of helping. The last one is enhancing information and knowledge. That means केस वर्कर के पास बहुत सारी जानकारी है, उसके पास जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, कम्युनिटी रिसोर्स के बारे में, गवर्नमेंट योजना के बारे में, ये क्लाइंट को देना है. सो एनहांस द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज लेवल ऑफ द क्लाइंट. उसको थोड़ा सा एजुकेशन, empowering, imparting some important relevant information. This is one type of help. This is a technique of enhancing resources. फिर उसको पता चलेगा, अरे मुझे अब वो हम जा सकते हैं, NULM के अंदर ऐसा ट्रेनिंग होता है, जॉब ट्रेनिंग होता है विथ 100% प्लेसमेंट. जैसे कुछ प्रीतम फाउंडेशन का कुछ ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, अच्छा नौकरी के लिए, जिस जहाँ कुछ स्कीम है, कुछ योजनाएं है, गवर्नमेंट का कुछ सपोर्ट है, कुछ लोन है, इंटरेस्ट फ्री लोन है, जैसे जो जो गवर्नमेंट का योजना है उसके बारे में क्लाइंट को बताना. फिर उसके वो जब उसको योजना में लाभ मिलेगा, फिर उसका जिंदगी में बदलाव आएगा. सो शेयरिंग द रेलेवेंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन that will bring some positive change in the life of the client. This is a technique for enhancing resources. Now, coming to the last one, explorative techniques or counseling technique. There are many. So, the casework has emerged from counseling. Counseling was the forerunner, the predecessor of casework. So, सारे केस वर्कर्स पहले काउंसलर थे. केस वर्क इज a short-term counseling. So case workers should apply, can use a number of counseling techniques. So they should learn some counseling techniques and use them. So there is a set of 10-15 counseling techniques which the case worker can
learn and practice. They are very useful, very easy to understand, easy to practice. We are not going to discuss very serious and very, what to say, very in-depth, what to psychological techniques. We are talking about very simple techniques which the social worker can apply. The first one is reflective discussion. Reflective discussion is entering into a reflective discussion, dialogue. क्लाइंट के साथ अच्छा चर्चा शुरू करना है, उसका जो स्टेटमेंट को रिफ्लेक्ट करना है, उसको क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करके उसका पॉजिटिव और नेगेटिव ड्रॉबैक्स एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के ऊपर डिस्कस चर्चा करना है. ये अच्छी तरफ चर्चा शुरू करने का एक टेक्निक है, क्योंकि दिस केस वर्कर इज क्लाइंट सेंटर्ड, ह्यूमन सेंटर्ड. इट इज नॉन डायरेक्टिव थेरापी. वहां क्या है, द केस वर्कर डज नॉट सजेस्ट, डज नॉट गाइड, द क्लाइंट गाइड हिमसेल्फ और हरसेल्फ. उसके लिए क्या चाहिए, एक पॉजिटिव डायलॉग चाहिए. उसको जो बोलते हैं उसको अच्छी तरह सुनना चाहिए. सुनने के बाद उसमें क्या पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा बात बोल रहे तो बताना है, या तुम्हारा थिंकिंग अच्छी लाइन में है, यू आर थिंकिंग प्रॉपरली, यू आर टॉकिंग वेल, यू आर सही रास्ते पे जा रहे. सो दिस वे यू एनकरेज द पॉजिटिव एस्पेक्ट. अगर उसमें कुछ ड्रॉबैक्स आ रहे, मुझे ऐसा लगता है यू डिड नॉट अंडरस्टैंड वेरी वेल, आपका जो स्पाउस, आपका पापा को ठीक से समझ में आए नहीं आपको, मुझे ऐसा लगता है देयर इज सम ड्रॉबैक्स इन योर थिंकिंग, यू मस्ट थिंक इट अगेन. So this is called reflective discussion. This is the first explorative technique or the counseling technique which the case worker has to do. हमेशा इसके ऊपर ध्यान देना है. अच्छा डायलॉग, अच्छा डिस्कशन केस वर्क इंटरव्यू में होना चाहिए. Then advice. This, I want to remind you, ये सारे टेक्निक एक ही केस वर्क में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो अप्लीकेबल भी नहीं होगा. कुछ टेक्निक कुछ केस वर्क सेशन में इंपॉर्टेंट होगा, कुछ टेक्निक दूसरा केस वर्क में होगा. दिस एडवाइस और रिफ्लेक्टिव डिस्कशन एक साथ नहीं चलते. ये एडवाइस कब चलता है, अगर आप बच्चों के साथ काम कर रहे हैं. व्हेन यू आर वर्किंग विथ स्मॉल चिल्ड्रन, they always look for good advices from their parents, from their teachers, for that matter even from social worker. So a little bit of advice can also be part of this counseling technique, but that should be the last technique to use. You must allow the child to discuss with you, enter into dialogue, and finally the child will take a decision for himself or herself. That is the best way. अगर जैसे बच्चे हैं वो आपके से कुछ एडवाइस चाहते हैं स्टडी के बारे में, कुछ टाइम टेबल बनाना है, वो स्टडी में कैसे मेमोरी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, को द चिल्ड्रन ऑलवेज लुक फॉर सम काइंड ऑफ टिप्स फ्रॉम अडल्ट्स. फ्रॉम योर लाइफ एक्सपीरियंस यू मे गिव सम टिप्स दैट कैन बी कॉल्ड एडवाइस, एंड दैट शुड बी ऑलवेज द लास्ट वन, ओनली व्हेन इट इज सॉट आफ्टर. अगर किसी पूछा नहीं है तो आप एडवाइस नहीं देना है. अगर किसी ने आपको, आप पूछ रहे आपका एडवाइस क्या है, आप कुछ एडवाइस देना चाहते हो, तब ये आपको अप्लाई करना है. नाउ द थर्ड वन इज मोटिवेशन. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक विच द केस वर्कर हैज टू लर्न एंड प्रैक्टिस. इट्स मेनली व्हेन यू वर्क विथ चिल्ड्रन एंड यूथ, उनको मोटिवेशन जरूरत है. जिंदगी में बड़ा कुछ बनने के लिए यू मस्ट गिव हिम सम गोल्स इन लाइफ, सम विजन इन देयर लाइफ. बच्चों को बोलना है, अरे तुम ऐसे जिए तो क्या होगा, तुम्हारी जिंदगी में क्या होने वाला है. गिव हिम सम फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव, सम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. ऐसा किया तो कहाँ पहुंचने वाला है. तुम्हारी जिंदगी में कोई कुछ डिसिप्लिन चाहिए, तुम्हें कुछ विजन चाहिए. सो इट इज मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक. बच्चों को बोले तुम तुम्हारे पापा जैसे जीना चाहते हो, तुम्हारे मम्मी जैसे जीना चाहते हो, तुम्हारा जिंदगी में कुछ तो गोल चाहिए. आप जैसे भी सिचुएशन में हो, लेकिन आपका ड्रीम के साथ आपको बहुत बड़ा आदमी बन सकते हैं. जैसे आपको रोल मॉडल दिखाना है,
और फॉर्मर प्रेसिडेंट का लाइफ, इब्राहिम लिंकन अनदर अमेरिकन प्रेसिडेंट, बड़ा बड़े लोगों का जिंदगी आप बच्चों के सामने रखना है। देखो कितना हम्बल लाइफ सर्कमस्टेंस से कितना बड़ा उन्होंने जिंदगी पाया है। सो गिव हिम रोल मॉडल, motivate them. This motivation is very important techniques. Clarification. Clarification means seeking clarification, helping the client to clarify his stand. अगर कुछ स्टेटमेंट उन्होंने बता रहे, क्लाइंट आपके साथ डायलॉग करते हैं, वो बता रहे मैंने ऐसा सोच कर किया, फिर केस वर्कर पूछेंगे क्यों मैं ऐसा सोचा, उसका कारण क्या है। सीक reason for whatever the client say. Don't allow the client to be irrational. अगर आपको लगता है ये थोड़ा इमोशनल डिसीजन लिया है, इसका कोई कारण नहीं है, देयर इज नो सफिशिएंट रीजनेबल रेलेवेंट रीजन बिहाइंड, उसको पूछना है तुम्हारा स्टैंड क्लैरिफाई करो, तुम क्यों ऐसा किया, उसका रीजन मुझे बताओ, तुम ऐसे फील क्यों हो रहे हैं मुझे बताओ, तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो। सो दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ रिफ्लेक्टिव डिस्कशन, सीकिंग क्लैरिफिकेशन फॉर वॉट एवर द क्लाइंट सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। तब वो सोचेगा अरे मैंने थोड़ा गलत सोचा है, ये मैं ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, मेरा बोलने के पीछे ऐसा कारण था, वो गलत था। सो दिस विल अलाउ द क्लाइंट टू रिफ्लेक्ट, allow the client to search for reason and help the client to be rational, realistic. A clarification technique is very useful. Correcting the perception. Fifth counseling technique is correcting the perception. Perceptions is something like attitude, prejudice. No, कभी कभी क्लाइंट के पास रॉन्ग परसेप्शन हो सकता है, वे दूसरों के बारे में ठीक से नहीं सोचते हैं, दूसरों के बारे में गलत सोच होता है, वो कुछ जिंदगी के बारे में सम रॉन्ग मिसकंसेप्शन, रॉन्ग कंसेप्शंस, रॉन्ग थिंकिंग, रॉन्ग परसेप्शन ऑन लाइफ, जिंदगी के बारे में कुछ इम्प्रॉपर मिसकंसेप्शन रखते हैं, उसको करेक्ट करना है। सो वो सोचता होगा हमारे घर में सभी को जिंदगी में ऐसे हुआ है, मेरा जिंदगी में ऐसे होने वाला है। तो दिस काइंड ऑफ रॉन्ग परसेप्शन, बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को जिंदगी में उसका प्रॉब्लम ये होगा, रॉन्ग परसेप्शन होगा। वो सोचता होगा ऐसा उनके साथ हो गया, इनके साथ हो गया, मेरे साथ भी ऐसे होने वाला है। सो लाइफ इज सो मच अनप्रेडिक्टेबल, वी डोंट नो व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट आर कमिंग टू इन आवर लाइफ टुमारो। तो फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव सोचना। सो रिमूव ऑल द नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव परसेप्शन। सो उसको पता नहीं है आपका जिंदगी आप सोचने जैसा नहीं होता है। सो अलाउ थिंग्स टू बी डिफरेंट, अलाउ थिंग्स टू चेंज, आपका जिंदगी में बदल हो सकता है। सो रिमूव ऑल द रॉन्ग परसेप्शन, दैट इज द टेक्निक ऑफ करेक्टिंग परसेप्शन। Sixth one is modeling. Modeling is very useful counseling technique. Means I have told you in the when I discuss motivation, show him good model. Even you can model your own life. You can have personal sharing. Case worker अपना जिंदगी भी केस क्लाइंट के सामने रख सकते हैं. It can be a success model. Some assertive training. बोलना है, ये कैसे बात करना है. You can प्ले सम रोल मॉडल, तुम्हारे पापा के ऐसा बात करना चाहिए. सो शो हिम कैसे बात करना है, उसको स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ, उसका टीचर के साथ, एम्प्लॉयर के साथ कैसे बात करना है. आई रियली डोंट लाइक व्हाट यू से, गिव हिम असर्टिव ट्रेनिंग. हाउ टू कम्युनिकेशन में कभी कभी क्या होता है, कुछ क्लाइंट दे आर नॉट गुड इन कम्युनिकेशन, their communication skills are not good. Then you should show a role model of how to communicate well. So this role modeling, so modeling the best appropriate behavior, this is one of the important counseling technique. Anticipatory guidance. Now guidance
is very similar to advice. So anticipatory guidance means futuristic guidance. अगर आप DADs के साथ काम करते हैं, अल्कोहलिक्स के साथ काम करते हैं, को पता नहीं अभी आपकी जिंदगी अच्छी तरफ चल रही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं. ऐसा आपने चल रहा तो 1-2 महीने के बाद ऐसा होने वाला है. फ्यूचर टेलिंग हिम तुम्हारे घर में आपको कोई साथ देने वाला नहीं है. योर वाइफ इज गोइंग टू लीव यू, योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू लीव यू, यू आर गोइंग इन ए वेरी डेंजरस पाथ. दिस इज एंटिसिपेटरी गाइडेंस. ऐसा चलना ठीक नहीं है. सो यू मस्ट चेंज. सो जस्ट bring the person, client, the dangers, the crisis which is going to happen in future. That is called anticipatory guidance. Role playing. I have told you in modeling. Showing the right model, role playing is the similar thing. Even role playing, you can ask the client to play role play. You can demand the client, तुम अगर इसका टीचर का प्लेस में है तो तुम कैसे बिहेवियर करने वाला है. तुम बोल रहे टीचर तो कुछ हमारा ध्यान नहीं दे रहे, तुम्हारा क्लास में 50-60 विद्यार्थी हैं. अगर आप देखो आप टीचर है एक दिन, बताओ कैसे टीचिंग करने वाला है. सो चेंज द रोल एंड हेल्प द क्लाइंट टू प्ले डिफरेंट रोल्स. प्ले द रोल ऑफ द पेरेंट, प्ले द रोल ऑफ द एम्प्लॉयर, प्ले द रोल ऑफ द टीचर. फिर क्या होता है, दैट पर्सन विल गेट न्यू इनसाइट. अगर टीचर हो तो ऐसा होगा, टीचर का थिंकिंग ऐसा हो सकता है. द क्लाइंट कैन अंडरस्टैंड अनदर पर्सन व्हेन दे रियली प्ले द रोल ऑफ अदर पीपल. दिस इज रोल प्लेइंग. दिस इज अ काइंड ऑफ psychological technique which can be used by the caseworker. 9th one is reality orientation. Reality orientation means कभी कभी ये क्लाइंट सपना में रहते हैं, ऑलवेज इन ड्रीम, इट्स नॉट इन रियलिटी. सच में क्या है, दुनिया क्या है, सच में दुनिया में क्या चल रहे, वो कभी कभी ये क्लाइंट भूल जाते हैं. सोचते ऑलवेज इन ड्रीम, डे ड्रीमिंग, सोचते हैं ऐसा होगा, ये ऐसा, मैं जो भी बोल सोचते वो सब सच होता है, मैंने जैसा सोचते हैं ऐसा सारे बिहेव करना चाहिए. तो सम पीपल आर not in the real world. They have lost the touch with the reality. So केस वर्कर को हमेशा ये याद दिलवाना है, ये आप हमेशा you are always living in the virtual world. You can be, this is the new name for the dream world. आप अपना सपने में रहते हो. आप सोचते हैं लोग ऐसे सोचने वाला है, लोग ऐसे करने वाला है, मैं ऐसे किया तो ये लोग ऐसे करने वाला है. सो यू ऑलवेज कीप ऑन ड्रीमिंग अबाउट व्हाट अदर्स आर गोइंग टू से, व्हाट इज गोइंग टू हैपन. यू आर फिक्सिंग योर लाइफ इन एडवांस. ऐसा होने वाला है. आपने जिंदगी नहीं जी रहे, आप सपना जी रहे. यू आर ड्रीमिंग लाइफ में. यू नो समटाइम पीपल इन द मॉर्निंग दे आर वेरी हैप्पी टू लिव इन द ड्रीम्स. उठना नहीं चाहते, किसी ने उठा दिया तो अरे तुम क्यों मुझे उठाया, मैं बहुत अच्छे सपने देख रहे थे, मुझे और एक घंटे ये सपने में जीना चाहता है. सम पीपल वांट टू लिव इन ड्रीम्स. सो ब्रिंग सच पीपल डाउन फ्रॉम द ड्रीम एंड टेल देम रियलिटी ऐसा है. कभी कभी ड्रीम अच्छा भी होता है, कभी कभी बुरा भी होता है. बुरा ड्रीम मतलब ये पूरा जिंदगी बर्बाद करने वाला ड्रीम होता है. अच्छा मीन्स मेरा जिंदगी सारे अच्छा होने वाला है. So reality is something in between. It is not always goody, it is not always bad. So life is a mixture of grief and happiness, joys and sorrows. So whenever there is a sorrow, the caseworker should say that this will change. आपका जिंदगी में खुश होने वाला है. अगर खुश है हमेशा, ये भी बताना पड़ेगा आपका खुश ज्यादा दिन के लिए रखने वाला नहीं है, कुछ तो ट्रबल आने वाला भी है. सो लाइफ इज नॉट सिंपली ऑलवेज गुड थिंग्स, नॉट ऑलवेज बैड थिंग. इट इज अ मिक्स ऑफ समथिंग. एवरीवन हैज टू एक्सपीरियंस बोथ द थिंग्स, हार्श रियलिटीज. सो रियलिटी इज a mixture of good things and bad things, good experience and difficult experience. So that is the reality. ये हमेशा
क्लाइंट को याद दिलवाना है, उनको बताना है आपका भी जो ट्रबल है ये निकल जाएगा, आपका अच्छा दिन आने वाला है, ये याद दिलवाना है. दिस इज कॉल्ड रियलिटी ओरिएंटेशन. रिमूविंग द गिल्ट फीलिंग्स, यूजिंग द गिल्ट फीलिंग्स कंस्ट्रक्टिवली. नाउ रिमूविंग गिल्ट फीलिंग्स. कभी कभी बच्चे, एडोलेसेंट गर्ल्स एंड बॉयज और यूथ, वो बहुत गिल्ट फील होता है ना. कभी कभी वो सोच समझ कर डिसीजन नहीं लेते हैं, फिर जिंदगी में कुछ तो आ जाते हैं. देन द पर्सन विल फील सो मच गिल्ट. मैं ऐसे किया इसलिए मैं ऐसा, मेरा जिंदगी ऐसा हो गया, मैं वो चूज करना चाहिए था, मैंने वो कोर्स लेना चाहिए था, सारे मेरा दोस्त उस कोर्स के लिए सेलेक्ट किया, मेरा पापा मम्मी भी बता दिया, मैंने वो छोड़ दिया, चलो अभी मुझे कुछ नहीं मिल रहे. सो सम रॉन्ग डिसीजंस इन लाइफ, स्पेशली इन फॉर द चिल्ड्रन, एडोलेसेंट, यूथ, इनका कभी कभी जिंदगी में बैड डिसीजन होता है, फिर उसके ऊपर हमेशा गिल्ट फील होता है, फिर वो गिल्ट में रहते, सोचते हैं मेरा पूरा जिंदगी गया क्योंकि मैंने एक रॉन्ग डिसीजन ले लिया, इस डिसीजन से वजह से मेरा पूरा जिंदगी गया. लेकिन यंग पीपल आर ऑलवेज प्रोन टू रॉन्ग डिसीजन. दैट इज द वे दे ग्रो. सो द केस वर्कर हैज टू टेल हिम, अरे ये जिंदगी का एक एक्सपीरियंस है, यू आर नॉट सो मैच्योर्ड, आपके पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, यू विल टेक ऑलवेज राइट डिसीजन, यू हैव टेकन ए रॉन्ग डिसीजन. आप किस गिल्ट से बाहर आ जाओ, ये जिंदगी में ऐसा होता है, लेकिन इससे आपको ये गिल्टी फीलिंग से आप कंस्ट्रक्टिवली इसको आप यू कैन ब्रिंग आउट समथिंग गुड इन योर लाइफ. दिस हैज टॉट यू ए लेसन. कभी कभी सम डिसीजन से आपको कुछ पैसा लॉस हो जाता है, सोचना है आई हैव लर्नड ए गुड लेसन बाय पेइंग दिस मच मनी. सो लाइफ इज ए लर्निंग. ज्यादातर फेलियर से, ज्यादातर रॉन्ग डिसीजन से आपको अच्छा सीखने को मिलता है. सो जो सीखने को मिलता है दैट विल मेक योर लाइफ मोर स्ट्रॉन्गर. यू विल बी एबल टू गेट much better reward in your life. Your life is going to be more successful in future. Something greater success is waiting for you. So just say you have to take the person out of the guilty feeling. वो पता ना ये ऐसा रॉन्ग डिसीजन जिंदगी में होता ही है कभी कभी. अभी आपको हो गया, कुछ लोगों को बाद में होता है, अच्छा हो गया, अभी आपने, यू डोंट फील गिल्टी अबाउट इट. यू कम आउट, करेक्ट योर लाइफ and live it and show them you have got a better life. You can construct a better life from these failures, from these defeats. This life is not end here. It's only a stepping stone for the success. Now 11th, partialization. Partialization is a very useful, very simple counseling technique. कभी कभी क्लाइंट के साथ ये बहुत बड़ा समस्या लेके आते हैं सोशल वर्कर, यो मुझे कुछ कंसंट्रेशन नहीं हो रहे, कुछ पढ़ाई नहीं कर सकते, कुछ मेरे काम में मुझे कंसंट्रेशन नहीं मिल रहे, मुझे कुछ नहीं कर सकते, आई फील वेरी मच हेल्पलेस, मुझे पता नहीं मैं क्या करूं अभी. सो देयर इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम, मोर काइंड ऑफ होलिस्टिक प्रॉब्लम विच द क्लाइंट इज प्रेजेंटिंग बिफोर द केस वर्कर. फिर केस वर्कर को क्या करना है, उसको टुकड़ा टुकड़ा करके पार्शलाइजेशन, उसको छोटा छोटा डायमेंशन उसको बताना है. अरे यू आर टॉकिंग सो मेनी थिंग्स, लेट मी टेल यू, आज सुबह का आपको ब्रेकफास्ट क्या किया है, आपका टाइम टेबल क्या है, आपका स्टडी क्या हो गया है. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज एजुकेशनल बैकग्राउंड, हिज फैमिली बैकग्राउंड, हिज ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड, उसको काम में किस के साथ काम करते हैं. ट्राई टू split that life into different dimension. उनको बताना है, अरे your problem is at home. मुझे लगता है आपका वर्क प्लेस में यू आर वेल एडजस्टेड, वो आपको बहुत अच्छा काम चल रहे, सारे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे, आपको जो काम बहुत, फैमिली में आपका थोड़ा दिक्कत है, या नहीं तो दूसरा तरीका से होगा, तो मेरा फैमिली, यू हैव गॉट ए वेरी ब्यूटीफुल फैमिली, वेरी सपोर्टिव फैमिली मेंबर्स, आपका वर्क प्लेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है. सो ट्राई टू लोकेट द रियल प्रॉब्लम, वेदर इट इज वर्क रिलेटेड, वेदर इट इज द पर्सनल लाइफ, वेदर इट इज द रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर, वेदर इट इज रिलेशनशिप विथ फ्रेंड. सो ट्राई टू make the problem into a
what to say, make it into smaller one or break it into small part. अगर एक प्रॉब्लम अलग थोड़ा सा पर्सनल भी हो सकता है, थोड़ा प्रोफेशनल भी हो सकता है, थोड़ा रिलेशनशिप में हो सकता है, तो ट्राई मेक हिम एनालाइज लाइफ इज शेयर्ड बाय डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट पीपल. इसके साथ अलग अलग तरीका से रिलेशनशिप रखना चाहिए, इसके साथ अलग अलग रोल्स प्ले करना है. यू शुड एवरीवन प्ले मल्टीपल रोल्स. फैमिली में एक रोल होता है, वर्क प्लेस में दूसरा रोल होता है. So each role should be played successfully, then the life will be successful. अगर एक जगह में फेलियर हो गया, उसको एक फीलिंग हो जाता है मैं सारी जगह में फेलियर हूं, मैं पूरा मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया है. ऐसा नहीं होता है. सो मेक हिम टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इज ओनली इन वन डायमेंशन. आपका जो समस्या है सिर्फ इस जगह में, इसको थोड़ा चेंज करो, बदल ठीक हो जाएगा. नाउ इंटरप्रिटेशन. Interpretation is very similar to clarification. So, clarification is asking reason. Now, interpretation is analyzing or clarifying the present and thinking about the future. ऐसा किया तो तुम्हारे जिंदगी में क्या होने वाला है. Try to interpret, bringing new dimensions. आप ऐसे सोचते हो, ऐसे डिफरेंट तरीके से सोचो ना. कैन यू थिंक डिफरेंटली. आप ऐसा इंटरप्रेट कर रहे हो, आप सोच रहे हो ये आपके पास ऐसा हो गया, फिर आपको तो जिंदगी तो फेल हो गया. अरे सोचो, अगर ऐसा हो गया, आप उसके साथ रिलेशनशिप छोड़ दो, अच्छा होगा, आपका दूसरा रिलेशनशिप आ जाएगा आपको जिंदगी में. आप योर लाइफ इज नॉट ऑलवेज बेस्ड ऑन दिस रिलेशनशिप, दिस नौकरी, दिस एजुकेशन. सो इंटरप्रेट द फेलियर्स डिफरेंटली. Interpret the events in your life with a future thinking. शायद मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा, मुझे दूसरा कुछ करके देखना पड़ेगा. सो लाइफ का जो भी इवेंट्स है, जो जिंदगी में आपने जो जो किया है, जो आपके साथ हो रहे हैं, उसके दूसरे तरीके से इंटरप्रेट किया तो उसमें से सोल्यूशन निकलते हैं. कभी कभी सोचता होगा अरे ये बहुत बड़ा फेलियर हो गया, लेकिन आपने इंटरप्रेट करके यस ये तो फेलियर नहीं है, ये मेरे जिंदगी में अच्छा हो रहा है. ये इंटरप्रिटेशन के बारे में हमेशा मेरे मन में कहानी आते हैं. ये एक एक्सीडेंट हो गया, 2 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, दोनों 2 बेड में है, हॉस्पिटल बेड, एक बेदार है. अरे क्या हो गया, मेरा दोनों पैर गया, अभी मुझे तो चल नहीं सकते हैं, मेरा जिंदगी सारे गया, अभी मैं क्या काम करूं. मैंने वो कौन सा टाइम में वो बस में चढ़ गया था, इससे मेरा जिंदगी में बहुत नुकसान हो गया. अभी दूसरा बेड में दूसरा उसका दोनों पैर गया, दोनों हाथ भी गया. फिर वो उधर है, माय गॉड मेरा जिंदगी तो बच गया, दोनों हाथ गया, दोनों पैर भी गया. मेरे साथ में जो बैठे थे वो तो मर गया, मैं तो उधर बैठे थे, 5 मिनट में मैंने शिफ्ट कर दिया, मेरा जिंदगी सेव हो गया. See how the person interpret the same accident. So this interpretation is another counseling technique. So with the caseworker will help the client to reinterpret, make the changing in the interpretation. Now universalization. What is universalization? Universalization is a very simple technique. इसमें क्या है, क्लाइंट को बताना है आप अकेला नहीं है, यू आर नॉट अलोन. आपके साथ जो हो गया है ये बहुत लोगों के पास हुआ है. आप सोचते हैं आप क्लास में बदमाश करते हैं, आप क्लास में कुछ पढ़ता नहीं, आप कुछ समझ में नहीं आ रहे. अरे तुम्हारे टाइम में मुझे कुछ समझ में नहीं आते थे, मैं तुमसे भी ज्यादा बदमाश करते थे. बदमाश करने वाला बच्चा अकेला नहीं है, बहुत सारे लोग हैं. So universalization is normalizing the person, the client, उसको जो फील हो रहे वो बहुत लोगों को फील हो रहे. दिस इज नॉट माई ओन प्रॉब्लम, इसको शेयर करने वाला बहुत है. दिस फीलिंग कैन रियली हेल्प. सेटिंग लिमिट्स. Setting limits means, sometimes the client develop some kind of emotionality, sentimentality, some unprofessional, too much of personal relationship
with the case worker. इसको बोलते हैं ट्रांसफरेंस. कभी कभी द केस वर्कर को क्लाइंट के साथ भी ट्रांसफरेंस होता है, इसको बोलते हैं काउंटर ट्रांसफरेंस. दिस इज इनअप्रोप्रिएट. दे आर अनप्रोफेशनल रिलेशनशिप. द केस वर्कर शुड नो वेयर टू पुट दिस लिमिट. हमारा पर्पसफुल रिलेशनशिप कहाँ तक हो सकते हैं, वेयर टू पुट द लिमिट्स. तो सेटिंग द लिमिट्स इन interpersonal relationship, that is very important technique. The confrontation technique means कभी कभी क्लाइंट के साथ आपको ऐसा डिबेट करना पड़ेगा. सम क्लाइंट्स आर टू मच वर्बल, दे आर वेरी मच कम्युनिकेटिव. उसके साथ कभी कभी आपको कन्फ्रंटेशन, उसको यू मस्ट डिबेट विथ हिम, टेल हिम वेरी ओपनली आप क्या सोचते हैं, इट इज रॉन्ग. कभी सम क्लाइंट्स आर सो एम्पावर्ड, वो सोचते हैं उन्होंने क्या सोचते हैं हमारा राइट सही होता है. देन द केस वर्कर हैज टू ब्रिंग न्यू एविडेंस एंड ब्रिंग रियलिटी एंड confront means standing opposite and entering into fruitful dialogue. Now few more techniques. Reaching out to the client is so much desperate, disappointed, so much in depression, so emotionally bring him out. Reaching out, उसको empathy, sympathy वो सब दिखाकर उसको just to whatever be your situation, the case worker is with him. That is reaching out. Renewing family links. कभी कभी क्या होता है, client is separated from the family emotionally. किसी के फैमिली में किसी के साथ संबंध नहीं है, अच्छा बात नहीं करते हैं. सो इसी सिचुएशन में फैमिली के साथ रिन्यू द रिलेशनशिप, दैट इज वन टेक्निक. इंप्रूविंग कम्युनिकेशन पैटर्न. कुछ क्लाइंट्स है ना, कम्युनिकेशन वेरी पुअर कम्युनिकेशन होता है, उसका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना, कम्युनिकेशन में बदलाव लेके आना, दैट इज अनदर टेक्निक. द लास्ट वन इज चेंजिंग एटीट्यूड. कभी रॉन्ग एटीट्यूड होता है, प्रिजुडाइज होता है, बायस होता है क्लाइंट के साथ, उसको बदलाव करना, दैट इज द चेंजिंग एटीट्यूड. सो दीज आर द सम ऑफ द काउंसलिंग टेक्निक्स. नाउ द लास्ट टॉपिक, रोल्स ऑफ case worker. Bhumiga. So there are mainly 4 type of the roles the case worker play. Enabler means client को enable करना, empower करना, उसमें capacity building, training, educating, giving instruction and empower the client. client की ability नहीं है, कमजोर था, उसका capacity बढ़ाना. This is primary role of case worker. Facilitator means helping, building liaison. Liaison means intermediary, playing the role of intermediary, lobbying, advocacy, lobbying also, helping the client, meeting some appropriate authority and standing, fighting for the client. Client का जो issue है appropriate agency के सामने रखना, उसका right के बारे में advocacy and fight for the human rights, abuse or exploitation से बचाना. So this all comes under facilitator's role. Then third one is resource mobiliser, linkage, networking, arrange finance, legal aid, family and community support. So community में जो resources है उसको mobilize करना, network करना, this is the resource mobilization's role. Finally, guide, counseling, guidance, giving suggestion, advice. So this is the playing the role of guide. That is the last thing to do. Means उसमें advice देना, suggestion देना. So these are the 4 major roles played by case worker in the helping process. So in this lesson, we have discussed various techniques, around 20-25 techniques, which are supportive techniques. Then we have studied the different roles, bhumika. So we have studied the supportive techniques, the techniques of enhancing the environment, counseling technique or the explorative technique, they are the most important techniques. Then we have studied the different roles the case worker play.
So in the next class and the last class on casework, we will discuss different models and settings and the caseworkers' difficulties, challenges, etc. So wish you all the best. Thank you.